Hello, Hussein. How are you doing today? Hi, Darun. Yeah, I'm well. How are you? I'm doing great. एक और बात मैं कहना चाहूँगा इस इन पॉडकास्ट के अंदर कि हुसैन एंड आई आर वर्किंग टुगेदर इन वन प्रोजेक्ट तो मैं हुसैन से कॉन्वर्सेशन के थ्रू मिला और इनकी स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी जिससे मैं थोड़ा इंस्पायर भी हुआ और थोड़ा मोटिवेशनल स्टोरी भी लगी इनकी तो दैट इज व्हाई आई हैव रिक्वेस्टेड हिम टू come into this show as a guest and fortunately he agreed on to it. So thanks again for it, Jose. So now over to you. तो मैंने तो आपको दो लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर दिया लेकिन अब आपका प्लेटफॉर्म है तो कंटिन्यू Yeah, so basically, don't get deceived by my looks. Okay, I am not that young, which is being shown in this video. I am lot elder with regards to age. So I started my career as a housekeeping boy, जहाँ पर मैं चाय डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने के लिए जाता था. आई यूज्ड टू वर्क इन अ लोकल शॉप और उनका काइंड ऑफ मिनी केटरिंग था कि ऑर्डर्स आते थे चाय देना या फिर कहीं पे खाना पहुंचाना. So I was working there to support my studies. 500 रुपया सैलरी था मेरा महीने का एंड आई यूज टू वर्क ओवर 30 days बिना छुट्टी. एक छुट्टी भी लिया तो सैलरी कटता था. इवन संडेज को हाफ डे आई हैव टू गो. बट यस दैट टाइम दैट मोमेंट आई ऑलवेज रिमेम्बर. आई ऑलवेज शेयर बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलते थे. कुछ तारीफ करते थे, कुछ बोलते थे कि अरे तू यहाँ पे तेरा टैलेंट वेस्ट कर रहा है. आई यूज टू फील गुड. कुछ लोग जब भी मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे, अप्रिशिएट करते थे. तो वन फाइन डे वन गाय संजय चौहान केम एंड ही सेड दैट मेरी दुकान में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दुकान है, आईटी मतलब कंप्यूटर्स का है. इफ यू वांटेड टू जॉइन दैट तो मैं तुझे 700 रुपये सैलरी दूंगा. इट वाज लाइक 30%, 35% हाइक. और एक बंदा जो 500 रुपये सैलरी में, उसको आप बोलोगे कि 200 रुपये महीना अगर बढ़ के मिलेगा तो मतलब इट वाज लाइक अ विश कम ट्रू. अरे 30% हाइक, वो भी इतना जल्दी, इतना अर्ली स्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में. तो आई जस्ट जॉइन दैट. और काम भी ये नहीं था कि चाय देना है या केटरिंग सर्विसेज वगैरह का था. इट वाज ऑन द शॉप ऑफ कंप्यूटर्स जहाँ पे ओएस री इंस्टॉलेशन वगैरह होता था. He taught me a lot of things. First of all, he taught me how to speak to people. Majorly and main thing is that I learned from him the skills which are I acquired the skills which were still now to me in my career. That whenever I wanted to grow something, I learned how to speak to people. And Sanjay Chauhan helped me understand that a lot. उन्होंने मुझे सिखाया कि तुमको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, how to sell your services in a market where there is a cutthroat competition. उस टाइम पे हार्ड डिस्क 25 रुपए 30 रुपए मतलब प्रॉफिट पे लोग बेच रहे थे. 50 GB 40 GB हार्ड डिस्क. एंड यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे कट थ्रोट था, कंप्यूटर बेचने के लिए लाइन लगा पड़ा था. एवरीवन वांटेड टू सेल ऑफ द थिंग्स. और he made me understand how you need to talk to people, how you should convince people, how you should get business to move forward. Yeah, I thought कि क्यों ना मुंबई जाया जाए, थोड़ा घूम के आएंगे. जेब में पैसे थे, जवानी के दिन थे. थोड़ी ऐश करके आएंगे मुंबई में. So thinking that with that mindset, मैं उज्जैन से निकला एंड आई ended in the city of dreams मुंबई. मेरे जैसे रोज पता नहीं कितने आते होंगे, तो उनमें भी एक मैं भी शामिल हुआ. जैसा एक्सपेक्टेड था कि फिल्मों में जैसा भागते भागते हीरो बड़े हो जाते हैं, मुझे भी यही लगा था मैं भागूंगा, मैं रईस बन जाऊंगा, अंबानी बन जाऊंगा. एक ऐसा झटका आया कि मैं सीधा मुंह के बल गिरा और मुझे होश आ गया कि मुंबई में सरवाइव करना इतना इजी नहीं है. बट फॉर्चुनेटली इनफ आई अगेन गॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ द वेरी जेंटलमैन, जिन्होंने मुझे व्हाट यू कैन से एक मस्जिद में नमाज पढ़ते टाइम मुझे वो मिले. एंड आई वाज सिटिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. तो उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो, तुम मस्जिद में. तो मैंने बोला हाँ, मैं उज्जैन से हूँ और मैं यहाँ पे आया था. तो मैं बैठा था कि थोड़ा देर से मैं निकलूंगा. तो हिज नेम इज कुतुबुद्दीन जवेरी. ही स्टिल रनिंग एसएमबी सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस. तो उनका सॉफ्टवेयर का बिजनेस था. But he required a guy who can support the hardware parts because of his software running business. So he offered me a job कि ठीक है चलो, मतलब अगर तुमको जॉब करने में इंटरेस्ट है तो मैं तुमको जॉब ऑफर करता हूँ. दिस इज समथिंग अराउंड 2006 का बात है.
तो आई वाज लाइक ये मुंबई में मस्जिद में बैठे-बैठे जॉब मिला है एंड होली प्लेस एंड आई वाज ओके फाइन दैट इज़ अ गुड चांस। तो मैंने बोला सैलरी कितना दोगे आप? तो उन्होंने मुझे बोला मैं तुमको 2500 सैलरी दूँगा। तो इट इज़ लाइक 300% हाइक ₹700 से सीधा 2000। तो आई वाज लाइक कि यार ये तो फिर जैकपॉट लग गया, लॉटरी लग गया। सो व्हाट इज़ द हार्म डूइंग इट? देन मैंने स्टार्ट किया जॉब वहाँ पर। आई वाज क्विक लर्नर एंड आई ऑलरेडी न्यू हाउ टू डू द आईटी का जो था सॉफ्टवेयर सॉल्यूशनिंग एंड ऑल दैट। आई क्विकली लर्नड। उनके क्लाइंट्स भी बहुत खुश थे द वे आई स्पीक, द वे आई अप्रोच टू देम। सो काफ़ी अप्रिसिएशंस मुझे मिले। उन्होंने मेरा सैलरी 4500 कर दिया 6 महीने में। मतलब फिर सीधा 50 प 500 पर 50% हाइक मिला मुझे। तो आई वाज वेरी मच हैप्पी और मेरी तो अच्छी कट रही थी। मतलब ठीक है, आई वाज स्ट्रगलिंग थोड़ा बहुत तो मुंबई में। आई वाज स्टेइंग एज अ पीजी जहाँ पे थोड़ा तकलीफ हो रहा था बट अच्छी कट रही थी। मतलब मुंबई में फैमिली को भी ऐसा लग रहा था लड़का कुछ तो कर रहा है जो यहाँ पे गलियों में सिर्फ कुत्ता आवारागिरी किया करता था, कुत्ता फजीती किया करता था, आज बॉम्बे में 4500 रुपए का नौकरी कर रहा है। मतलब कुछ तो अच्छा काम कर रहा है। एंड फ्रॉम दैट डे आई नेवर टर्न बैक एंड आई नेवर लुक बैक। और ये टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दैट व्हेन आई वाज डूइंग द जॉब विद मिस्टर कुतुबुद्दीन जवेरी। I was completing my final year of commerce graduation. So again, I need to quit that job because I have to my exams regular student tha. But I got a concession looking onto my family background because I am supporting my family, my studies. So my college allowed me to do a job and they told me, okay, fine, if you want, you can come back for the exams. So basically, I quit my job and went for the exams, and then I graduated myself again, and then finally I got a graduation degree in 2007, 2008, and I was a graduate with a full-time course. So now I was very happy that okay, fine, I am at least a graduate. Commerce graduation hai. I tried doing certain odd jobs of accounting and all that, but always once you sow a seed, it can never go from your mind. So I was always into that IT dimag, investigation, troubleshooting, challenging the solutions. So वो था ही. Fortunate enough, I came back to Mumbai again. फिर से सपने लेके हाथ में कुछ नहीं था. As I already quit the job, I started giving the interviews through Naukri portal. Then I got a chance to get interviewed by Wipro. Wipro Infotech में interview दिया and they offered me a salary of 10,000 rupees. Okay, so it was like again 4.5 से 6 महीने के अंदर, I mean not even 6 months, 3 months के अंदर you are getting a 10,000 of, again that is a 200% high, तो or उस टाइम पे अगर 250% मैं high. बात करूँ, जब मैं आप सॉरी टू इंटरप्ट यू ओवर हियर। अ, उस टाइम की जब मैं बात करूँ फ्रॉम 2002 टू 2009 और 10, तो विप्रो और एक एचसीएल ऐसी कंपनी होती थी जो ऑफ कैंपस लोगों को आईटी में जॉब दिया करती थी। Definitely. I still remember they used to pick people stating that they'll pay for their बिट्स पिलानी academics and वो उनके लिए फ्री में काम करते थे. I still remember 2 to 3 people coming और मैंने उनको पूछा तुम्हारा सैलरी कितना है? बोला अच्छा तुमको सैलरी भी मिलता है क्या? सो देयर क्वेश्चन फर्स्ट टू मी वाला, अच्छा तुमको सैलरी भी मिलता है क्या? हमको तो कुछ सैलरी नहीं मिलता, हमारा तो हाँ जो ट्यूशन फीस है दैट इज पेड बाय विप्रो. तो मैंने उनको पूछा भी था. आई वाज लाइक देन हाउ यू सस्टेन? तो बोला नहीं फैमिली से हमको आता है. द ओनली थिंग वी रिक्वायर्ड वाज आवर ट्यूशन फीस व्हिच इज बीइंग पेड बाय विप्रो. So that was a cultural shock that ऐसा भी होता है. मतलब वहाँ से कैंपस स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू वर्क सो हार्ड 12-12 15-15 घंटा. दे यूज्ड टू जस्ट वर्क फॉर दैट एंड आई यूज्ड टू आस्क देम कि अगर तुम इतना काम करते हो तो बिकॉज ऑफ यू वी गेट प्रेशराइज कि भाई तुम वो करता है तो तुम क्यों नहीं करते? बोला इफ आई विल नॉट डू देन मैं अपना एकेडमिक्स पूरा नहीं कर पाऊंगा. So that also, that kind of infrastructural people we worked at that point of time, जहाँ पे पब्लिक फोर्सफुली भी इतना टेंशन में प्रेशर में काम कर रहा है 12 घंटा 15 घंटा, नाइट में आ रहा है सुबह जा रहा है, फिर सुबह कॉलेज जा रहा है वहां से पढ़ रहा है. So looking on to those, I feel that the struggle which I am doing, I am coming in a shift, doing a 9 hour shift, 10 hour shift, and then going back home. That was still comfortable for a salary of 10,000 in 2007. That's still a blessing for today. I believe and I completely accept that it's still it's still a blessing. So then the journey started from Wipro. From 2007, I joined Wipro. My first company was
Capita, where I still work, and I proudly say that I'm working for Capita as an assistant manager into an IT. I have seen so many changes, so many what you can say cultures coming, going, managers coming in, going out. But I can still say that I still feel very you know I still feel very prestigious to work in that environment. Still have my couple of friends, colleagues, which are there from me with me from 2007, 2008. So it's them to get help with them to learn from them after so many years. I'm still learning and still understanding that how things can be done. Basically, when I came to Mumbai, I have nothing but just a knowledge of how to wash utensils, how to get the systems from one place to another. I used to carry a desktop monitor on a cycle, 10 kilometers, 15 kilometers, uh, uh, through that bicycles I used to travel because we were not privileged to have bikes or something like that available in my those shops or ये on होता है those कि proprietary things. इनिशियली अगर जो स्ट्रगल से उठ जाए वही बहुत बड़ी चीज़ होती है आज की डेट के अंदर तो। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि अगर मैं हुसैन के बारे में सोचूँ या किसी अनदर पर्सन के बारे में सोचूं कि यार वो तो बंदा बहुत स्टेबल है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहले भी कहीं पर ये डिस्कस किया था इसी सीजन के अंदर कि हमको नहीं पता कि उसका इनिशियल स्ट्रगल कितना मुश्किल था, कैसे वो उस मुकाम पे पहुंचा जहां वो आज खड़ा है। चाहे वो एक बहुत अमीर बंदा नहीं है, जैसे आपने बोला कि मैं अंबानी बनने आया, चाहे आप अंबानी के जितने नहीं हो या उससे ज्यादा अमीर नहीं हो, लेकिन यू आर एस्टैब्लिश्ड, मीन्स यू आर नॉट giving your hands to someone to beg something. You're established, you are earning for yourself and your family, कि you can say I'm a stable person. So इस स्ट्रगल से जो उठ जाए वही बड़ी बात है। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, when you was working as a housekeeping in your hometown, जैसे आपने बताया कि मैं कहता है हाउसकीपिंग की तरह वहाँ काम कर रहा था, उस टाइम पे मतलब क्या ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी थी कि आपको ये काम करना पड़ा instead of being educated as well? Yeah, so for that, I need to discuss my childhood. Okay, so I'm not from a very established family. I mean, we do not have a very established family, physically established family. My dad business just went down from a very established business due to uh, what you can say time hota hai kharab time aata hai. My dad also saw a bad time in that, but at that I was very young. I was just a kid who is studying in third standard. So we got out of our paternity house. We moved out from our paternity house. We were struggling to get a meal for 2 days. That is actually a reality that दो टाइम का खाना खाने के लिए my dad was I mean खिलाने के लिए हम लोगों को my dad was struggling. डेट डेप्ट हो गया था, कर्जा हो गया था एंड बहुत बहुत एकदम लो डेज थे वो का वेर आई यूज टू रिमेम्बर वी यूज टू ईट अराउंड 5 to 6 so that दोपहर का भी हो जाए और रात को भी भूख ना लगे. At that point of time, I still remember some of the people. Okay, I like to mention my friends. I have my friends which are from my childhood. They used to come to my home. They used to take me कि चलो हम लोग बाहर जाएंगे. They used to give me parcels. जो राशन वाले थे वो राशन वाले जो थे वो मुझे मतलब हमारे घर के लिए हालत देखते हुए उन्होंने क्रेडिट देना चालू कर दिया कि ठीक है तुम राशन लेके जाओ, तुम पैसे जैसे आएंगे तुम्हारे पास. आई स्टिल रिमेम्बर मैं the first time I went to get a grocery, that gentleman is still there, still in my hometown, and he looks with a very respect now at me, seeing me that yes, I have made a very huge difference in my life. So that first time when I got a monthly grocery, it was
was $250, 200 पूरे महीने का राशन लेके साइकिल पे लाद के, और 2.5 किलोमीटर पूरा मैं ट्रैवल करके गया था, because he was the only guy who used to give us that grocery in on credit for this long period. So my dad was struggling, and my dad traveled to Kuwait. Okay, वो कुवैत में गए ताकि so that he can just earn some good amount of money. So at a very young age, I was just my dad departed to foreign country Kuwait. I was just in standard third, so 9 साल 10 साल मेरा एज था. Uh, but that also didn't went well. Okay, so that's what always I say, that आंखें बंद करने के बाद जो दिखता है वो शायद आंखें खुलने के बाद ज्यादा भयानक भी हो सकता है. तो my dad got arrested in Kuwait for breaking of certain laws. कुछ कानून है कुवैत के which you cannot break. Okay, you cannot roam freely like we do in India. वहाँ पे you cannot, you always have to have your master. So my dad went to a servant visa. There are different kinds of visa. So my dad went as a house help, on a house help visa, but he got caught roaming on a street without his master. So that is kind of visa जो कुवैत में निकलता है आज भी. वो रूल है वहाँ पे, you cannot roam without your master in Kuwait. So if you get caught, you need to call your master to get you out of the jail, or else you will be deported back to India. So my dad cannot afford, because उन्होंने already पैसा दिया था और वो बहुत सारा था, कर्जा अगेन लेके वहाँ पे गए थे, तो काफी कर्जा और हो गया इन शॉर्ट. तो डैड भी वहाँ पे जो कर्जा उतार रहे थे, यहाँ पे हम लोग जैसे तैसे सरवाइव कर रहे थे. So then I figured out at a very young age that I have to do something to support my family. So my mom used to do odd jobs जैसे सिलाई करना, और my mom used to do very odd jobs, सिलाई करना, पेंटिंग करना, बच्चे लोगों को कुछ को ट्यूशन देना, ऐसा. My mom used to do so many things to support us. So when I moved into eighth or ninth, I started doing odd jobs. थोड़ा बहुत छोटा मोटा 200 100 200 300 400 रुपए का जो भी काम मिलता था after school, I started doing that. So I took that responsibility of earning from a very quite young age. जब भी मुझे शायद अगर I was very good in sports. I was very good in sports. मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, आज भी अच्छा खेलता हूँ. Table tennis, I used to play table tennis on a district level because my school used to sponsor for those competitions. तो वहाँ पे पैसा मिलता है. I used to play table tennis on a district level. बैडमिंटन में जोनल लेवल पे खेला हूँ. तो आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, बट आई डू नॉट हैव दैट प्रिविलेज टू गो टू स्पोर्ट्स, बिकॉज मुझे मेरा फैमिली को सपोर्ट करना था. अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, और उस जमाने में जो कुछ भी था वो पढ़ाई था. अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुमको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम घर को कैसे पालोगे, घर को नहीं पालोगे तो लड़की नहीं देगा. तो दैट इज हाउ इट गोज. तो या इट वाज अ वेरी cruel period of time which I went through. But yes, I went through. या आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक नॉर्मल लाइफ के अंदर देखूँ तो ये ऐसी मतलब पर्टिकुलर स्टोरी क्या तो हम किसी सीरियल के अंदर देखते हैं या कोई लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है या कोई रियलिटी शोज चल रहे होते हैं तो वहाँ चीजें सुनने को दिखाई देती है. लेकिन हाँ, लेकिन कहते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. और अगर आप एक आम इंसान को ही देखोगे कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं पहुंचा है, उसको डायरेक्ट उसको अप्रिशिएट नहीं करो कि जाए आता तो देखो क्या कमी है उस चीज की. उससे पूछो कि पहले क्या कमी थी, तुमने पहले क्यों नहीं बोला. और मैं अभी भी आई एम अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर. ओ, मैं वेरी अभी भी गुड. काउंसलिंग करता हूँ फॉर द डिप्रेस्ड सोल्स एज अ सोशल सर्विस. अगर कहीं पर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि कहीं पर कोई डिप्रेशन में है, या इफ एनीवन वांट्स टू टॉक टू मी. और वी ऑल्सो हैव अ स्नेह प्रति करके, इंस्टाग्राम पर भी उसका हैंडल है, फेसबुक पर भी है स्नेह प्रति, where we have couple of people who are who are into these counseling things, because we have figured it out that there are a lot of people
in the world who wants to talk to someone but they couldn't hold on to. And I am doing this purely on a social service basis. I do not charge people for any counseling or for any motivational talks or something like that. बट हैविंग सेड दैट ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है दैट व्हेन यू टॉक टू पीपल व्हेन यू काउंसल टू पीपल यू योरसेल्फ नीड्स a counseling too. So I was also having a grief counseling then for like 6 months. थेरेपी हुआ पूरा 6 महीने तक. ऐसा uh, क्या हुआ था? my mom expired just after ओके, a month of lockdown. आई एम सॉरी। So she was the only one जो रात को 12 बजे भी मैं आने के बाद ऑफिस से आने के बाद she was waiting ready to listen to all my frustrations गालियाँ जो भी रहता था. My mom was suffering from Parkinson disease and she was on the bed for last 8 years before she died. And she was on the bed, completely on the bed, means everything. मतलब सब कुछ खाने से लेके पीने से लेके सब कुछ उनका बेड पे होता था. My dad used to do it, my wife used to do it, और मैं भी बहुत हद तक वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू डू इट. मतलब मैं उनको बाहर लेके जाता था ताकि सो दैट आई नो दैट शी इज इन अ वेरी बैड स्टेट. ओके, बट तो भी मैं उनको तकलीफ देता था सो दैट एटलीस्ट इन हर लास्ट डेज शी कैन एंजॉय व्हाट शी हैव ऑलरेडी. I mean, the days she couldn't because of us, she did everything to raise us so that we can reach at some point of time in our lives. तो उन्होंने वो जो सेक्रीफाइस किया था, आई वांटेड हर टू सी दैट. तो मैंने उनको बहुत सारी बाहर, आई नो दैट शी कैन नॉट इवन मूव. मतलब मैं उनको उठा के, मेरे डैड उनको उठा के हम लोग उनको लेके जाते थे सभी दूर. तो शी यूज टू जस्ट सिट ऑन द व्हील चेयर, बट जहाँ पे भी हम लोग जाते थे हम लोग उनको साथ में लेके जाते थे. शी एंजॉयड हर लास्ट फ्यू इयर्स विद अस. बाय द गॉड ग्रेस I could do some certain things. So she expired just after a month. लॉकडाउन लगा. लॉकडाउन वाज ऑन 21st March 2020 and April 21st 2020 she expired and she left us everyone and just she left us in the middle of the thing. And I couldn't accept that she is no more because एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि मतलब she could do this to me, she can leave me and just go. तो और वो लॉकडाउन था. आई मीन आई ओनली नो what hardships I have to go through to bury her. मतलब सिर्फ मैं और मेरे डैड, जस्ट दो जन हम लोग पूरा कब्रिस्तान गए. नो वन कुड कम बिकॉज वो लॉकडाउन था. नो वन वाज अलाउड टू कम. पीपल वर फियरिंग कि भाई क्या हुआ, जाऊंगा बाहर निकलूंगा मैं जिंदा रहूंगा या मेरी भी कब्र कब्रिस्तान में खुदी हुई रहेगी, ये लोग मुझे ही ना दफन कर दे वहां पे. तो उस टाइम तो बहुत डर था। पीपल वर वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरे हुए थे. मुझे तो शायद 15 दिन 20 दिन तक तो होश भी नहीं था कि मतलब आई वॉज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड नाउ. आई मीन आई स्टिल हैव माई डैड विथ मी बट I was very attached to my mom. So then I was just, searching online. One gentleman called me that you were searching online. So I said, yes, I am. I'm going through a grief period. What So he suggested me what you were searching that moment? uh, quotations. मतलब I used to look for some quotations, कोई novel ऐसी जो grief को कम कर सके. कहीं पर मेरा ध्यान लग सके, मैं कहीं और पर अपना ध्यान लगा सकूँ या कहीं पर मैं ऐसा. आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर लाइक 1 year after my mom expired. So he called me, he told me that I cannot help you until unless you are ready to pay. So I was like, okay, fine, just make me come out of the grief which I'm going through. So he arranged certain therapy sessions and मैं वो therapy sessions 6 महीने तक लिया. मतलब almost I took 12 to 15 sessions and I paid a good amount of money. And then I realized that no one can help you until unless you want to help yourself. Right. And then I said that okay, fine, now I'll help myself. बहुत सारी चीजें I kept on realizing. I look back onto my life that मैं कहाँ पर था and now where I am.
I figured that out that I have to live for certain people which are still there with me. खुद के लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों के लिए जो डिपेंडेंट है. मोटिवेशनल काइंड ऑफ थिंग है, मोटिवेशनल थिंग है. सो I came out by thinking on that, and I realized that some people will always need you. They might not be that thankful like you expected कि मैंने इसको इस चीज से बाहर निकाला तो ये मेरे लिए ये चीज करना चाहिए. There is an expectation always, but in true life, in true world, that is not how the things works. So that is also a learning that if you do something for someone, or if you feel to do something for someone, if you expect that that is how they should behave, then that is a wrong doing for themselves, for them. Then you should stop doing that. So then I realized that people may not understand that how they have to thank you in return for what they got from you. So that is certain things which I understood, and then I came out of the grief, and now today I'm helping those people who want my help, who want to speak to, who want to get listened to, so that they can come out of the grief, of the depression they are going through. In my bad days when I was not earning that much, I used to get those people who helped me unconditionally. I don't know from where they came, why they helped me, but they came and they helped me. So I just wanted to thank them, to return the favor to them. What good they did, the seed they sow, I am just sowing another seeds for another person so that someone else can reap the fruits of the seeds they sow. 70% corporate people are not satisfied their daily life. By their daily life, they want something extra over and above their routine. But उनको खुद को पता नहीं है what they want. They cannot talk to people, they cannot speak to people because उनको पता ही नहीं है there are professionals there जिनसे वो बात कर सकते हैं. So उस मेंटर क्योंकि वो जो सेशन पे मैं इसमें एक लाइन बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली कहीं से सुना कि अगर डिप्रेशन के बारे में बात करना है या अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी से बात करना, ये आज भी इंडिया में एक तरह से टैबू माना जाता है. टैबू मतलब ये पुराना वो होता है ना, एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का माना जाता है. अगर किसी को मैं अपने डिप्रेशन या अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊंगा तो वो सीधा मुझे मुझे यही पागल बोलेगा, ये तू समझेगा. तो पागल है, पागल है. करेक्ट. सबसे ये चीज मैं इसीलिए ये मतलब ये आपका प्लेटफॉर्म मुझे मिला, ये मैं एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू, you should seek help. You should seek help before it's too late. Before it's too late, you should seek help. Certain things can be stopped at a very early at a very early stage. बहुत इनिशियल स्टेजेस पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. I shouldn't be telling you this thing. One of my deceased friend, okay, she did a suicide because उसके पास कोई सुनने वाला नहीं था. रियली? And yes, और उसके उसका एक 4 साल का बच्चा है. She hang herself on a festive season. So I am just still thinking कि वो कितनी अकेली होगी. फेस्टिव सीजन में वो अपने आप को फांसी लगा के सुसाइड कर रही है. I know she called me twice that we need to speak, we need to talk, but I was like कि तेरा फैमिली है, तेरा हस्बैंड है, how can I talk to you? But there are certain things you should always look onto the data points, the trigger points that someone is getting disturbed, कुछ तो उसको issues आ रहा है, someone is not what she or he used to be. Speak to those people, get stick to those people, because people really need your help in today's world where everyone wants to post happy things on social media, but वो खुद अंदर से कितने अकेले हैं. I can give you n number of examples कि आपको सोशल मीडिया पे हैप्पी फेसेस दिखेंगे. दे विल बी लाइक डूइंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, पोस्टिंग एवरी फेस्टिव थिंग्स और सब खुशियां ही बताते हैं, बट अंदर से वो कितने अकेले हैं, they only know. So those people really need to be reached out to. If you know someone, if you think that someone needs help, let them know there are professionals available. And in India, there is still high number of professionalisms available. There is humanity in every professional touch. लोग इंसानियत के नाते भी कुछ चीजें कर देते हैं, though they are professionals,
बट इंसानियत के नाते भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के नाते बहुत प्रोफेशनलिज्म छोड़ के बहुत सारी चीजें इंसानियत के नाते भी कर देते हैं। आई और आई कुछ एम ऐसे वन ऑफ लोग भी है, कुछ ऐसे लोग भी है जो इंसानियत के नाते फायदा उठाने वाले सबसे ज्यादा का रेशियो है। नेगेटिविटी हमेशा रहती है। मैं सबको बोलता हूँ आज नेगेटिविटी क्यों फैली है, बिकॉज मैंने मेरी अच्छाई छोड़ दी है। मैंने मेरी अच्छाई छोड़ दी है, इसके लिए आज बुराई है। अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैं दूसरे के साथ बुरा करता हूँ। अगर लेकिन मेरे साथ किसी ने अच्छा किया है तो मैं दूसरे के साथ अच्छा करता हूँ। और ऐसा नहीं है, यू विल ऑलवेज सी गुड थिंग्स। एक और मेरे पास तो एंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय बाइक फ्रॉम ऑफिस टू होम। दैट वाज अगेन एट अ वेरी यंग एज, अर्ली एज, जहाँ पे मुझे ये शौक था कि लड़कियां मुझे नोटिस करे, ओ ही दैट गाइस कमिंग फ्रॉम अ बाइक। और मैं पेट्रोल भराने के तो पैसे रहते नहीं थे, बिकॉज नॉट अर्निंग दैट मच। तो 1 लीटर पेट्रोल डलाना, इतना ही चलाना है, इतना चलाना है। तो एक दिन पेट्रोल गाड़ी में जल्दी खत्म हो गया एंड इट वाज 11 इन द मिडनाइट। मुंबई में 11 बजे वैसे तो रात होती नहीं है, बट कुछ एरिया, सबर्बन एरियाज में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कुछ मिलेगा नहीं। आई वॉज जस्ट पुशिंग माई बाइक के यार कोई मिले मुझे, या कोई मुझे धक्का दे दे या कुछ कर दे तो एटलीस्ट मैं कहीं पेट्रोल पंप तक पहुंचूं। पेट्रोल पंप अगले 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक कुछ था नहीं। सडनली वहां से एक कार पास हुई एंड दैट गाय स्टॉप्ड आगे जाके। तो मैं डर गया। मैंने बोला सुनसान रास्ता है, कार पार्क किया है, गाड़ी है, अभी ऊपर वाला ही बचा है। अगर ये मेरे को बोलेगा मोबाइल दो, पर्स दो, तो देना ही पड़ेगा। ही केम आउट, ही आस्क्ड मी कि क्या हो गया है। एंड आई वाज लाइक मेरा पेट्रोल गाड़ी में खत्म हो गया है। तो ही सेड ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ही वेंट अगेन टू हिज कार। पेट्रोल का एक बॉटल था, 1 लीटर का, जो पानी का बॉटल आता है 1 लीटर, उसमें 1 लीटर पेट्रोल था। ही गेव इट टू मी एंड ही सेड ये लो पेट्रोल एंड रीच सेफ। तो आई वाज फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में शॉक में था। मतलब मैं उसको बोलूँ क्या, थैंक यू बोलूँ, पैसा दूँ, मैं क्या करूँ, ये बंदे को क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ इस बंदे के साथ। एंड ही केम टू नो के दैट आई एम स्टिल इन शॉक के कोई एक बंदा रात को 11 साढ़े 11 बजे रोक के 1 लीटर पेट्रोल का आपका बॉटल देके बोले भाई रीच सेफ। वो भी उस जमाने में जहाँ पे लोगों को 10 रुपए 20 रुपए 1000 रुपए के लिए लोग अपना अपने फ्रेंड लोगों का बुरा करने से पीछे नहीं हटते। सो आई वाज लाइक कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है थैंक यू बोलूं। अगर आप पैसे के लिए बोलते हो तो मैं क्या करूं, मतलब हाउ शुड आई थैंक यू। मैंने उनको ऐसा सिंपल सा पूछ लिया। तो उन्होंने मुझे मुझे बोला कि मुझे बहुत लोग मिलते हैं, मैं सबको ऐसे हेल्प करता हूँ। कुछ लोग मुझे पैसे ही डायरेक्ट दे देते हैं कि ये आपके पैसे ले लो, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, ये वो। मैं बोला नहीं, ये एहसान तो है आपका, बट हाउ कैन आई थैंक यू। उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम इफ यू सी समवन पुशिंग हिज बाइक विदाउट पेट्रोल, यू नीड टू हेल्प हिम। तुम उसको पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का जिम्मेदारी लोगे, भले वो कहाँ पे भी मिले, कैसा भी मिले, कुछ भी मिले, तुम उसको वहां तक पहुंचाने का जिम्मेदारी लोगे। एंड आई प्रॉमिस दैट गाय दैट हाँ, अगर मुझे कोई भी ऐसा बंदा मिलता है हु इज पुशिंग हिज बाइक ड्यू टू पेट्रोल इशू या कहीं पे भी कुछ इशू है, आई विल मेक हिम रीच सेफेस्ट प्लेस जहाँ पे वो अपना बाइक का काम करवा सके। एंड फ्रॉम दैट डे आई एम स्टिल डूइंग दैट थिंग। कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता है, सो मैंने एक अच्छा ही किया है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को पुश किया है, उनको भी मुझे मैंने यही बोला है कि तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, यू पुश समवन एल्स। सो इफ आई कैन मेक 100 पीपल पुशिंग नेक्स्ट 100 पीपल, ये अच्छा ही फैलेगी। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दे नो कि यार मुझे एक बंदा अच्छा मिला है, उसने मेरे साथ अच्छा किया है, ये वो अच्छा है, आगे फॉरवर्ड करेगा ही करेगा। लुकिंग ऑन टू दैट कि उसके साथ 20 बुराइयां हुई रहेगी, बट वो बाइक को किसी को धक्का देते हुए देखेगा तो वो धक्का दे देगा। फाइन, आई गिव यू समथिंग दैट यू कैन रीच अ सेफेस्ट प्लेस, safer place where you can just reach to a place where which is safe for you. यार ये पॉजिटिविटी वाली बात तो मैंने बहुत ही कम देखी है अपनी लाइफ के अंदर, और रियलाइज भी बहुत कम करी है। जब आप ये स्टोरी सुना रहे थे तो मुझे एक मूवी की याद आ रही थी, सलमान खान की मूवी है, मैं नाम भूल गया उस मूवी का, और एक साउथ इंडियन एक्टर की मूवी है, मैं नाम भूल गया हूँ उस टाइम पे। तो सेम टू सेम वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट था। तो मैं एम नॉट श्योर कि जो आपको एक्चुअल में जो बंदा मिला आपको पेट्रोल गया उसका भी वही मोटो था। ये क्योंकि मेरे साथ तो आज तक लाइफ में हुआ ही नहीं, और मेरे साथ नहीं हुआ
आपके साथ हुआ है, किसी और के साथ हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे साथ नहीं हुआ तो मैं उसके ऊपर कुछ रियलिटी भी नहीं बता सकता कि एक्चुअली में ये ट्रुथ है या स्टोरी। आई एम नॉट डिनाइंग टू यू कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ, बहुत ही रेयर बंदे होते हैं जिनके साथ ये चीजें हुई होगी आज तक। नहीं, मेरे साथ द रीजन फॉर me always being, what you can say, the chosen one, because I am tend to look onto the good things. आप सब चीज में अगर पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगा ही मिलेगा। लॉ ऑफ इफ यू, अट्रैक्शन। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। I'm bad in physics, but I understand that if you do good, if you sow good, then you will reap good. If you find positive things in everything, अगर आपको किसी ने, मतलब आई पर्सनली थिंक, अगर आपके साथ किसी ने बुरा भी किया है, ओके, तो इफ आई फिगर इट आउट समथिंग पॉजिटिव ऑफ इट, व्हाट आई विल फिगर इट आउट, कि अगर तुमको किसी ने ऐसा तुम्हारे साथ बिहेव किया है, तुमको बुरा लगा है, सो दैट इज हाउ यू हैव नॉट, यू शुड नॉट हैव टू बिहेव विद समवन एल्स। सो दैट इज द पॉजिटिव थिंकिंग विच आई कैन गेट आउट ऑफ इट, कि अगर आज किसी ने मुझे गाली दिया है, मुझे बुरा लगा कि अरे यार वो मुझे गाली दे के गया, मेरा मेंटल पीस में लगा। सो व्हाट आई पॉजिटिव, व्हाट पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंग्स आई डिराइव फ्रॉम दैट इज, मुझे किसी को ऐसा गाली नहीं देने का है जिससे उसका दिन खराब हो जाए, जिससे उसका उसका दिमाग खराब हो जाए, या वो किसी चीज से अगर जा रहा हो और मैं उसको गाली दे दूं और उसके लिए वो और वर्स कर दे। So that is how you have to change your attitude, your mentality, because you want peace for yourself. Forgiveness is the greatest blessing. लोगों को अगर आप उनके किए के लिए माफ कर दोगे तो आपको भी वो पीस और वो शांति मिल जाएगी। हाँ, तूने किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, तूने ही किया। So ultimately, there is a very good saying of Mother Teresa. I mean, I am a very big fan of her saying. It is never between you and them. It is always between you and God. तो आपके और उसके बीच में तो कुछ है ही नहीं. It is always between you and God. So if you do something good for anyone, या तो आप पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंग्स करोगे, पॉजिटिव चीजें करोगे, तो आपने उसके लिए नहीं किया है, आपने तो ऊपर वाले के लिए किया। ऊपर वाला ही आपको उसका सिला देने वाला है। इंसान में कोई ताकत नहीं है कि वो किसी को कोई सिला दे सके। दैट गुड इन फॉलोइंग रिलीजियस पर्पस, बट मदर टेरेसा का एक बहुत अच्छा सेइंग है। आई मीन, आई हैव रीड I have read that quotation by her, that it is never between you and them. It is always between you and God. So ultimately, you have to convince yourself that what you do, what you did is good. I mean, when you will be asked, you had a choice. You can do good or you can do bad. And if you choose doing bad, then it is always your choice doing bad. अगर आप अच्छा कर सकते हो तो अच्छा ही करो। इररिलेवेंट आपके साथ बुरा हुआ है या बुरा हुआ, मतलब हर बार बुरा हुआ है, बिकॉज people used to look onto the negative things but they do not count their blessings. I know most of the time it is very जिसके ऊपर गुजरती है उसको ही पता है कैसा है क्या है, बट आई एम स्टिल अ बिग एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल, दैट बहुत सारी चीजें अच्छे के लिए ही होती है। इफ आई टेक माई लाइफ एग्जाम्पल, आई यूज टू कर्स दैट, क्या है ये, लोगों के पास उस टाइम पे गाड़ियां रहती थी, मैं साइकिल से जाता था, पैदल स्कूल जाता था, स्कूल की फीस भरने के लिए मुझे काम करना पड़ता था। बट इफ आई सी टुडे, डाउन द लाइन, आफ्टर 10 years, I can see that today I'm sitting in a very reputed organization with good friends who supports me in every up and down. They call me if I am not, uh, if I'm not seen for like couple of days, उन लोग मुझे पूछते हैं कि 2-3 दिन हुआ दिखा नहीं। So genuinely caring people who don't expect anything in return. All these things is possible because I have invested that time with a positive approach, with a thankful mindset, that everything, if put together, works for good. Everything which we put, everything that is put together works for good. That is a very good saying in the Bible.
बाइबल का वर्स है वो, एवरीथिंग विच इफ यू पुट टुगेदर वर्क्स फॉर गुड. I told you there are n number of speeches available on YouTube. Everywhere you can find motivational speakers speaking about their life. If you if you see सभी का सार अगर हम लोग देखेंगे तो that is one thing. Everything when put together works for good. But only you have to keep patience and faith that yes, nothing can go wrong with me. I have so many examples of uh, people who are thrown away because of their physical disability. I in one of my speeches I told that there is a guy, the speech is available on a YouTube. He is currently a 50 crore uh, umpire entrepreneur. He's a CEO of a 50 crore project. He's running by himself. He cannot even speak, he cannot see, he cannot listen, but he's running a 50 crore empire by himself. He's an entrepreneur. You can find him on the internet. So that is how there are people. If something bad happens, don't look on the bad things. You can still figure out a very good thing or positive things from that bad incident. In short, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं किसी और का एग्जांपल भी लूँ, मतलब मैं तो हमेशा एग्जांपल्स के ऊपर ही बात करता हूँ कि जब तक मैंने कुछ देखा नहीं है या मैंने इसको रियलाइज नहीं किया तो मैं उसको सच नहीं मानता। बाकी तो दुनिया में करोड़ों बातें हो रही है, होती है, बिलीव भी करते हैं, कुछ बातें बिलीव करने वाली भी नहीं होती और 100% सही भी नहीं होती है और 100% गलत भी नहीं होती, सबके मिक्स मैच रिव्यूज भी होते हैं। राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल गिव यू सम स्ट्रेस फॉर सम टाइम, लेकिन आप जब रियलाइज करोगे, जब आप उस स्ट्रेस से निकलो, या आप अपनी लैंग्वेज उसको डिप्रेशन का हो, जो कि आई कैन नॉट डिफरेंशिएट इन डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, लेकिन जब उस स्ट्रेस से आप निकलोगे तो आपको पता चलेगा यार जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। अगर वो नहीं होता तो आज मैं या तो उस दलदल में फंसा हुआ होता, definitely. या उस दलदल में अगर मैं निकल गया हूँ तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे बाद में रियलाइज होने से अच्छा मुझे वक्त से पहले रियलाइजेशन हो गई है। वो जो थोड़े वक्त का जो स्ट्रेस होता है ना, जब आपको आपके साथ कोई बुरा करता है, वो ऐसा मोमेंट होता है हुसैन कि आपको कोई अच्छा नहीं लगता। आपको मन करता है कि बस अब जो हुआ है वही है, और उसके आगे आपको कुछ सुनाई या सोच नहीं होती, जो एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह सकता हूँ। At that point of time, you have to realize you need to speak to someone. That is the trigger point. Okay. नो, What happens is until when until sorry to interrupt you again over here, right? मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप उनसे एक अच्छी बात कर सकते हैं जो एक्चुअली आपके रास्ते से होकर ऑलरेडी वो बंदा या बंदी जा चुका है। करेक्ट? whatever guilt you have, whatever stress you have, you know what exactly happened with you. You do have a knowledge about it, what exactly happened with you. But आप अगर अपने अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे किसी और को जिसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, जो मुझे लगता है कि आप इफ इट इज ओनली यू आर कंज्यूमिंग योर एनर्जी, दैट्स इट। या तो एक बोतल पियो और काम खत्म करो, फिर बोलते रहो। no, actually, I would like to tell you something. Okay, you might have not realized it till now, but I'll tell you something. आज आपके सामने, आपके पास में कुछ हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। आज आपको, आई टेक इट अ वेरी ब्लंट एग्जांपल ऑफ फूड। ओके, आज यू आर हंग्री। ओके, तो आप भूखे हो, तो आपको ये पता है कि आपको क्या खाना है। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप दूसरे भूखे के पास जाओ ये रियलाइज करने कि आपको क्या खाना है। सो वन सेल्फ ऑलवेज न्यू द आंसर।
मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास ही वो आंसर है। यू डू नॉट हैव टू सीक एन आंसर फ्रॉम एनीवन एल्स। आई नेवर सेड दैट यू सीक आंसर फ्रॉम आउटसाइड या किसी और से आंसर्स लो। यू ऑलवेज हैव योर आंसर्स। अगर आज आपको भूख लगा है तो आपको पता है कि आपको खाना खाना है। आपको अगर खाना खाना है, देन यू नो दैट व्हाट यू वांट टू ईट। ओके, इफ करेक्ट, यू राइट, आर अ डाइट फ्रीक, इफ यू आर अ डाइट फ्रीक, यू विल से दैट मैं कैलोरी वाला नहीं खाऊंगा, मैं डाइट फूड खाऊंगा। ओके, नाउ इफ यू नो दैट ठीक है, आई कैन चीट वन डे टू माय डाइटिंग या जो भी है, मैं चिकन मटन जो भी है, फास्ट फूड, वेजिटेरियन में जो भी है, मैं आज ये खाऊंगा, पनीर है, जो भी है, एक्स वाई जेड। So you yourself have all the answers with you. You do not have to seek answers from outside. That is what I'm trying to make everyone realize. You राइट, always knew your answers. राइट, तो अगर आप आज भूखे हो तो यू डू नॉट हैव टू गो टू अ नेक्स्ट हंग्री पीपल एंड से दैट मुझे भूख लगा है, तुझे भी लगा है क्या? नो, यू नो द आंसर। यू विल गेट अ कंपनी फ्रॉम द हंग्री पीपल। अगर आप भूखे हो और दूसरा भी भूखा है, यू विल गेट अ कंपनी बट यू विल नॉट गेट एन आंसर। वही तो मैंने तो कहा यू ना डू आपको कि नॉट, आप ही को पता है कि आप दलदल से निकले हो जब आप उस हाँ, स्ट्रेस के मोमेंट से निकल जाओगे। नहीं, अगर आप वो स्ट्रेस के मोमेंट में भी हो, सो नाउ यू नीड टू सिट एंड थिंक। इधर यू कैन टॉक टू योरसेल्फ। आप खुद से बात करो। आप खुद से भी बात कर सकते हो कि यार ये मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, व्हाट आई कैन डू, हाउ आई कैन डू, व्हाट चेंज आई कैन लुक फॉर ओवर हियर। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट प्रोफेशनल, बिकॉज प्रोफेशनल लोगों को आपको उकसाना आता है। दे नो हाउ टू प्रोवोक यू टू लुक योरसेल्फ, लुक इनसाइड ऑफ योरसेल्फ फॉर द आंसर। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आपको यही रियलाइज कराएंगे। दे विल नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा एंड ओवर एंड अबव। वो आपको क्या हेल्प करेंगे कि आपको प्रोवोक करेंगे टू लुक इनसाइड योरसेल्फ एंड गेट द आंसर्स। because I said in at the first beginning of my conversation with you, अपना अपना conversation जहाँ से start हुआ, that none of the counselors can give you a prescribed solution। जैसे राइट, कोई डॉक्टर आपको पैरासिटामोल दे देगा बुखार के लिए, कोई भी काउंसलर आपको मेडिसिन नहीं देगा कि नाउ इफ यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, ये गोली ले लो आप 3 बार दिन में एंड यू विल बी फाइन। दे कैन नॉट, they cannot do that, and they will not do it because the answers you seeking, you already know those answers। वो आपके पास ही है। you have those answers। The difference what a counselor or a professional listener will make is they will make you realize what is the answer। करेक्ट, या तो देखो, that is what I am doing right now। आई विल all बी those वेरी people ऑनेस्ट। who will listen to your those people who will listen to your podcast, I just the message what I wanted to portray over here is there will be hardships coming, and I'm not the only one। I'm just the blessed one to reach till out to reach till this stage। There might be so many people who can relate that मैं तो आज 60 साल से मेहनत ही कर रहा हूँ, नहीं मिला, but there is always a story, positive story out of those struggles also। राइट, एवरी And if स्टोरी हैज अ बैकग्राउंड। someone, yes, yes, so if they'll speak to themselves, किसी से बात करेंगे, खुद से ही बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव हुआ, they will eventually understand that इतना स्ट्रगल उन्होंने किया, but the positive thinking, the positive thing which they will get out of it will always be a win-win situation। It will never be like मैंने सिर्फ दिया ही दिया है। I have never seen uh, any individual till this long in my life that वो ये बोल सके कि मैंने सिर्फ दिया है, मैंने सिर्फ लुटाया है, कुछ कमाया नहीं। हर लाइफ के अपने ही मजे हैं। क्या बोलूँ मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके ऊपर तो मैं भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कुछ कमेंट करने वाली बात ही नहीं है। कि लाइफ ने क्या सिखाया वो आपको ही पता है। जैसे आपको भूख लगे तो आपको ही पता है कि आपने क्या खाना है। या तो किचन में जाओ, क्विकली कुछ ना कुछ बनाओ और खा लो और पेट भरो और चुपचाप से बैठ जाओ। और आप अगर डाइट कॉन्शियस है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ से भी रिलेट, क्योंकि आपको खुद ही सारे आंसर पता है, लेकिन वो आंसर ढूँढने के लिए आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए।
आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। देखो मैं साइकोलॉजिकल को नहीं जानता इतना। यस, डेफिनेटली विल कम आउट विद एन आइडिया दैट कि आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट सम साइकोलॉजिकल पॉडकास्ट इन दिस सेम प्लेटफॉर्म सो दैट मेरे जैसे लोग जिनको कहूँ तो अक्ल ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो मेरे जैसे मार्केट में भी बहुत होंगे जिनको कम नॉलेज होगी इसके बारे में। तो उनके लिए आई थिंक सो आई शुड स्टार्ट एंड यू विल बी द first guest for that. I am hoping that we will quickly initiate that particular podcast on psychological only. So let's see कैसे ये जर्नी चलती और कैसे ये आगे जाएगी. So definitely we will get in touch again. Surely, definitely. I am always reachable Yeah, I know. for the You're sake always. of I have your phone service, number. and for the sake of social service. I mean, if I can do anything good, uh, Hmm, my mom used to tell me that इंसान बने हैं तो इंसानियत रखो. right, correct. तो तो मेरे for को इंसान humanity. आज मैं थोड़ा-सा स्पीचलेस इसलिए भी हो गया क्योंकि आपने उस तरह पे अपना टॉपिक डाइवर्ट कर दिया जहाँ पे मेरी प्रोफिशिएंसी नहीं है। कहते हैं ना, एक आजकल बड़ा मीम चल रहा है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो एक्चुअली मेरी कुछ प्रोफेशनलिज़्म नहीं है उसके अंदर, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया उसके अंदर। क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए, इसलिए मैं चुप ही रहना अच्छा समझता हूँ। लेकिन डेफ़िनेटली मैं आऊँगा इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि आपसे मेरी बात हुई इसके बारे में और मेरी कुछ इर्द-गिर्द लोगों से भी बात हुई है, जो मेरी थोड़ी सराउंडिंग्स में हैं। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज़ हमको भी नहीं पता जैसे आपने बोला 70% रेशियो है, हम मतलब एक एग्ज़ाम्पल दिया आपने, क्योंकि एग्ज़ाम अगर ह मेरे जैसे बंदे को एक पढ़े-लिखे इंसान को भी नहीं पता होगा कि एक्चुअली में कि हम डिप्रेशन में हैं या नहीं हैं। तो जब पता चलता है तो Exactly. बहुत देर चुकी हो चुकी होती है। तो अब मेरे जैसे जिसकी सोच ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड है या कैसे भी लोगों की सोच है, उनके बारे में नहीं पता, उनके बारे में ये टॉपिक मेरे को छेड़ना ही पड़ेगा। तो इट्स अ गुड किक आई कैन से। If we can make a difference even for one people, it definitely make हुँ, a huge difference. वैसे तो हम लोग 130 140 करोड़ है, बट अगर एक का भी हम लोगों ने कुछ भला कर दिया तो इट इज वेरी बात गुड सही है। फॉर. भला भला तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो हुसैन, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू दिस पॉडकास्ट चैनल और बस ये चैनल की एक शुरुआत थी कि आप जैसे अच्छे लोग आएँ, जो अपनी एक स्टोरी शेयर करें क्योंकि वी बिलीव दैट एवरी स्टोरी हैज़ अ बैकग्राउंड और योर स्टोरी एक्चुअली हैज़ अ बैकग्राउंड कि कहाँ से आपने एक हाउसकीपिंग से स्टार्ट किया और कहाँ आप आज की डेट में हो। चाहे इट इट टूक टाइम, बीच में इतने रोड ब्लॉक्स आए, आपके फादर के साथ जो इंसिडेंट हुआ, एक ओवरसीज़ आपके फादर रह रहे थे, उस टाइम पे क्या एक फैमिली के ऊपर बीतती है। आई कैन ईज़िली अंडरस्टैंड दैट एंड जैसे आपकी मॉम एक्सपायर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर योर लॉस। उस टाइम पे आप कैसे ओवरकम हुए। तो एक्चुअली मी दिस इज़ अ स्टोरी व्हिच आई रियली लाइक टू हर्ड अबाउट इट एंड एक्चुअली आई वांट टू फील लाइक दैट। क्योंकि अपनी अपनी लाइफ के अंदर हम बहुत सोचते हैं कि हम बहुत दुखी है, लेकिन औरों की लाइफ के अंदर हमको नहीं पता कि वो कितना हमसे भी ज़्यादा दुखी है। Definitely, there is a saying which goes that if you ask people to sit in a round table and share their problems, everyone will eventually get up with their own problems. So, राइट, so यू आर that is how एब्सोल्युटली it is. Like, it is very easy to judge people sitting on a different side of a lake, राइट। but that is okay. I mean, everyone has their own perceptions, labels to judge people. So, आपने कहा 140 करोड़ है हम इंडिया के अंदर तो हाँ, 140 करोड़. There are तो 11 different kind of mentalities.
They will Mm, definitely meet each and every one of those mentalities. डेफिनेटली बिकॉज हर किसी की मेंटालिटी अलग है। आप मुंबई में बैठे हो, आपकी मेंटालिटी मुंबई वाली हो गई, हमारी दिल्ली जैसी हो गई। तो एक्चुअली में इंसानों की मेंटालिटी बहुत अलग है। इट डिपेंड्स। लेकिन Only I would like to again say that there is always good things around you. हम्म, Only you have to have a vision to see good. If you can see bad, then you could have seen good also. Okay. Try to look on the good things. It will definitely give you good positive vibes. You will feel happy for doing good things. I shouldn't be saying this on a podcast where it will evaluate major of the people will be listening. I don't want any kind of controversy, but we have seen so many poor kids on the street begging. We will give them money or something like that, and we will just say, okay, fine, you take this amount of money. They know that they will get a money because they are begging. There are so many institutions running where they can eventually work for those kind of kids. So I myself never give मतलब पैसा मैं उन लोगों को कभी नहीं देता. I take one of those kids to mall. I ask both of them to sit, and in a McDonald's we went, and those guys were looking on to me like शायद मैंने उसका किडनी मांग लिया हो. They were looking at me like that कि ये दोनों को लेके ये ऐसा आया हुआ है. But I asked them to sit in that cafe and I gave them food to eat. So that is a good thing I did on that day, and that whole day I was like कि मैंने बहुत बड़ा जंग जीता है. I mean I just won a war kind of thing. So small deed of good, small act of good deeds a day will eventually give you those vibes. You will start doing those things. So just make a habit of doing one good deed in a day that will keep you happy for that day. अगर आप 30 दिन तक ये करोगे तो आप 30 दिन खुश रहोगे वो एक छोटे से अच्छे काम के लिए. This is what my personal suggestion to all the listeners, that start doing one good deed a day. छोटा से छोटा करो, बड़ा से बड़ा करो. That is not the matter of the fact. कुछ But तो you करो। do a good deed. हाँ, you do a good deed which you feel happy about doing. और वो चीज दिन भर याद करो, मैंने ये किया, मैंने ये किया. इफ यू कैन टॉक टू 10 डिफरेंट पीपल, गो एंड टॉक टू दोस 10 डिफरेंट पीपल. आज मैंने ये अच्छा काम किया. क्या पता उस 10 में से 2 को भी वो काम अच्छा लगे और शायद वो दूसरे दिन से वो चीज करने लग जाए. So you doing good for others also, making doing good for others. I know I am very positive and I am very optimistic, but that is how things works. Okay. If negativity works in that manner, positivity will also work in that manner. अच्छाई भी बुराई के साथ ही चलती है, तो मैं अच्छाई फैलाने में ज्यादा यकीन रखता हूँ. So I will बहुत always be optimistic, positive things, telling positive things to do. That is just a request to all the listeners that do one good thing a day जिससे आप दिन भर खुश रह सको. And then if we are making a difference, if you can make a difference in your life, thanks to Tarun's podcast. You're welcome, Hussein. So थैंक यू हुसैन वंस अगेन। Thank तो you. Welcome. अगर शुभ हिंदी यूज करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका शुक्रिया, आपने मुझे कुछ अच्छी पॉजिटिव थिंग्स फैलाने का एक मौका दिया अच्छे नहीं, प्लेटफॉर्म पर. डेफिनेटली विल गेट इन टच अगेन on that particular topic which we have already discussed. Yeah, डेफिनेटली. great. थैंक So यू. okay, Hussein, bye. Have a nice day ahead and आप हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के साथ जीते रहे। ऊपर वाला आपका अच्छा ही करे। थैंक यू. बाय। विश यू द सेम. थैंक थैंक यू। यू. थैंक यू। बाय।